अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं ग्लूकागॉन के ऊपर। ना, ग्लूकागॉन इज रिलीज जब हमारे पास लो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हो जाते हैं। सो व्हेन वी हैव लो ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन, हमारे पास क्या होता है? हमारे पास ग्लूकागॉन रिलीज होता है। कैन यू गाइस टेल मी हमारे पास ग्लूकागॉन कौन से सेल्स रिलीज कर रहे होते हैं? अल्फा सेल्स रिलीज कर रहे होते हैं। वेरी गुड। नाउ द टारगेट सेल फॉर ग्लूकागॉन is only one, which is your liver. So सिर्फ हेपाटोसाइट्स जो आपके लिवर सेल्स हैं वहीं पर ग्लूकागॉन जाकर बाइंड करता है और कहीं पर बाइंड नहीं करता। नाउ हमारे पास जो ग्लूकागॉन हो गया, इंसुलिन हो गया, can you guys tell me whether they are peptide hormones or whether they are lipid hormones? हम्म अभी मैंने ग्लूकोनियोजेनेसिस पढ़ाया ही नहीं है। ग्लूकोनियोजेनेसिस में अभी पढ़ाऊंगी जब हम ग्लूकागॉन पे आ जाएंगे। ग्लूकोनियोजेनेसिस टेक्स प्लेस व्हेन glucagon is released. Glycogenesis takes place when insulin is released. Glycogenesis क्या होता है? Glycogenesis is glycogen synthesis. So glycogen synthesis का जो नाम है प्रोसेस का, दैट इज ग्लाइकोजेनेसिस, जहां पर ग्लाइकोजन बन रहा होता है। सो ग्लाइकोजन से याद कर लो, ग्लाइकोजन जहां पर आएगा उसका मतलब है कि हमारे पास ग्लाइकोजन बन रहा है। और ग्लाइकोजन कब बनता है? जब हमारे पास इंसुलिन रिलीज होती है। तो एज ए रिस्पॉन्स टू इंसुलिन प्रोडक्शन हमारे पास ग्लाइकोजन बन रहा होता है। राइट। तो हमारे पास ग्लूकागॉन इज ए पेप्टाइड हार्मोन, एंड एज Amar enlightened us, why is glucagon a peptide hormone? Because हमारे पास जो लिपिड हॉर्मोन्स होते हैं ना, दे कैन डायरेक्टली क्रॉस द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। उनको सेल सरफेस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स की जरूरत नहीं होती। इंसुलिन भी पेप्टाइड हार्मोन है, ग्लूकागॉन भी पेप्टाइड हार्मोन है। व्हाई? Because they are binding to cell surface membrane receptors. Peptide hormones would bind to cell surface membrane receptors because they cannot cross the phospholipid bilayer directly. Lipid hormones can easily cross your phospholipid bilayer और उनके जो receptors होते हैं वो cytoplasm के अंदर होते हैं. So because glucagon and insulin are binding to cell surface membrane receptors, they are your peptide hormones. अच्छा जी. Now, हमारे पास, let's say, this is the receptor, and हमारे पास जो ये receptor है, that is binded to a protein. Now, this is your receptor, the cell surface membrane receptor, which is binded with a G protein. Now, हमारे पास ग्लूकागॉन जो है उसकी टारगेट साइट क्या है? उसकी टारगेट साइट है लिवर सेल्स। सो ये जो रिसेप्टर है वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा? वो लिवर सेल पर ही प्रेजेंट होगा। और ग्लूकागॉन जो है वो किससे बाइंड करेगा? वो इस रिसेप्टर से बाइंड करेगा। So this is your glucagon, and this glucagon binds to its receptor. अब जैसे ही हमारे पास ये ग्लूकागॉन अपने रिसेप्टर के से बाइंड करेगा, इट वुड एक्टिवेट योर जी प्रोटीन। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन? यहां तक इजी सब कुछ? ना, इसी सेल सरफेस मेम्ब्रेन पर एक एंजाइम होगी। So yeah, there is an enzyme which is present somewhere here. As I'm trying to make a complementary enzyme, see me struggle for the next few seconds. Okay, so this is an enzyme which is present
on the cell surface membrane, and this enzyme is known as adenylyl cyclase. Now, once the glucagon has attached itself to its receptor, the G protein would be activated. And this activated G protein would bind to the adenylyl cyclase. ठीक है? So हमारे पास activate हुआ G protein, and this G protein leaves its place over here, and it would attach, the activated G protein would attach to the adenylyl cyclase. Now, once the activated G protein binds with this enzyme, adenylyl cyclase, this enzyme gets activated. So, AC gets activated. Are you all with me till here? So, पहले क्या हुआ? Glucagon bind किया. Second हुआ activation of G protein. Third क्या हुआ? The activated G protein binds with the adenylyl cyclase, and hence once this binding takes place, the adenylyl cyclase gets activated. Once the adenylyl cyclase gets activated, it would catalyze a reaction, and that reaction would be an ATP molecule present in this liver cell would be converted, would be catalyzed into something known as cyclic AMP. अगर आप लोग खाली camp भी लिख दोगे, you would get your mark, but it is basically, the full name is cyclic AMP. Now, this cyclic AMP acts as a secondary messenger. Can you guys tell me what was the primary messenger over here? What's the primary messenger in this story so far? Okay, now, acha, there are mixed answers. Some people are saying G protein, some people are saying glucagon. Can you guys tell me this story, the entire story that we're trying to make sense of, ये story किस point पे start हुई थी? अगर मैं इस पूरे mechanism से एक चीज निकाल दूं और ये mechanism stop हो जाए, तो at which part would you say that if this does not happen, the rest of the stuff does not happen? One, two, three, four. Glucagon binding to the receptor. So अगर मेरे पास glucagon आता ही नहीं, तो क्या मेरा G protein receptor G protein activate होता? और अगर मेरा G protein activate नहीं होता, तो क्या मेरी adenylyl cyclase activate होती? और अगर मेरे पास ये enzyme activate नहीं होती, तो क्या cyclic AMP बनता? So basically, the starting point or the trigger or the first messenger was what? It was glucagon itself. Because glucagon cannot directly enter the cell, and because it cannot directly stimulate the conversion of glycogen to glucose, it needs a secondary messenger. इसको ऐसे समझो. For example, I am speaking English, ठीक है, to maybe a French person. I am saying something in English and I need it to be delivered to the French person. Would I need a mediator in between, a translator in between, जो मेरी बात उस फ्रेंच इंसान तक पहुंचा सके? ना. ग्लूकागॉन ने एक एंजाइम को बोलना है कि प्लीज तुम ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दो. अब ग्लूकागॉन का मसला ये है कि वो बेचारी एंटर ही नहीं कर सकती सेल के अंदर. अब वो जब तक सेल के अंदर एंटर नहीं कर सकती, वो एंजाइम को कैसे कहेगी कि भाई तुम प्लीज ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर दो ग्लूकोज में? उसको कोई मैसेंजर चाहिए. वो कहती है ओके फाइन, इफ आई कैन नॉट एंटर इनसाइड द सेल, आई कैन आस्क समबडी एल्स ऑन माय बिहाफ टू डू दिस जॉब. And who is going to do that job for glucagon? Who is going to trigger that enzyme? The cyclic AMP. Are we now cool? Primary messenger समझ आ गया, secondary messenger समझ आ गया. इस पे ये question आ सकता है that what is the need to you know have a secondary messenger in this pathway? So you would say the glucagon cannot directly enter the liver cells where the cell surface membrane and stimulate the enzyme responsible for the conversion of glycogen to glucose, and hence a secondary messenger is required. Clear है सबको?
ग्रेट. नाउ वंस द साइक्लिक एएमपी इज मेड, हमारे पास एक एंजाइम, हु इज द प्राइमरी मैसेंजर? अहमद, टेल मी, व्हाट डू यू थिंक? मेरी पूरी कहानी सुनने के बाद कौन है प्राइमरी मैसेंजर? ग्लूकागॉन, वेरी गुड. सो द हार्मोन इज द प्राइमरी मैसेंजर. क्योंकि हार्मोन की वजह से सारे चेंजेस आ रहे हैं ना पूरी हमारे सेल के अंदर. सो दैट्स द प्राइमरी मैसेंजर ओवर हियर. एंड cyclic AMP would be your secondary messenger. Exactly. Glucagon started the whole thing, so that's the primary messenger. Now, this cyclic AMP, once it is made, हमारे पास एक enzyme cascade शुरू हो जाएगा. Enzyme cascade का क्या मतलब है? Cascade का मतलब होता है a series of action. Could you explain why cyclic AMP is required? Amar, you enlightened us that glucagon is a peptide hormone because it cannot directly cross the cell surface membrane, right? Now, ग्लूकोगॉन क्यों रिलीज हुई है? ग्लूकोगॉन इसलिए रिलीज हुई है, हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल्स कम हो गए हैं और लिवर में ग्लाइकोजन रिजर्व्स हैं, और हमें पता है कि ग्लाइकोजन कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज. हमें लिवर सेल से कहना है प्लीज ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दो, उसके लिए ग्लूकोगॉन आया है. अब ग्लूकोगॉन आया और ग्लूकोगॉन को पता चला है कि ओ मैं तो अंदर जा नहीं सकता, मैं अंदर जा नहीं सकता, तो जो एंजाइम है जो ये कन्वर्जन करवाएगी उस तक मैं कैसे पहुंचूं, बिकॉज मैं तो अंदर ही नहीं जा सकता कि मैं ग्लाइकोजन कन्वर्जन वाली एंजाइम से बात कर सकूं. सो मुझे किसी और के थ्रू अपना मैसेज पहुंचाना पड़ेगा. So this is why a secondary messenger is made, because glucagon cannot directly enter the cell surface membrane. It cannot directly stimulate the enzyme which is responsible for breaking down glycogen, and hence we require a secondary messenger. Are we clear? Perfect. So once the cyclic AMP or CAMP is made, what happens is a cascade of reaction takes place. Cascade का क्या मतलब होता है? A series of reaction. जैसे डोमिनो इफेक्ट होता है ना, टेल मी इफ मैं सही बता. डोमिनो इफेक्ट में वही होता है ना कि एक चीज गिरती है तो सारी चीजें साथ में गिर जाती हैं. दैट्स द डोमिनो इफेक्ट, राइट? परफेक्ट. तो एक तरह से समझो हमारे पास एक डोमिनो इफेक्ट यहाँ पे हो जाएगा. डोमिनो इफेक्ट क्या होगा कि हमारे पास एक के बाद एक रिएक्शंस होते चले जाएंगे. सबसे पहले क्या होगा? This cyclic AMP would go to an enzyme known as protein kinase. हमारे पास एक inactive protein kinase के पास जाएगी. Inactive protein kinase. अच्छा, मैं बहुत सारी एंजाइम्स बता रही हूँ, वो सारी एंजाइम्स हमें पता नहीं होनी चाहिए, मैं सारा कैस्केड एक्चुअली समझाने लगी हूँ. अब जब वो इनएक्टिव प्रोटीन काइनेज के पास जाएगी ना, साइक्लिक एएमपी हैज व्हाट? दिस इज बेसिकली योर adenosine monophosphate. It has a phosphate group over here. It would phosphorylate this protein kinase. It would give a phosphate group to the protein kinase. And once the inactive protein kinase accepts this phosphate group, it becomes activated. Activated protein kinase. Now, once it has activated this phosphate group, does this thing has a phosphate group of its own? Do you all agree? Perfect. Now, this activated protein kinase would go to an inactive enzyme, which is your phosphorylase kinase. अब ये inactive है, इसको हम कैसे activate करवाएंगे? बहुत obvious है. Come on, tell me. How would this inactive phosphorylase kinase get activated? By adding a phosphate group. So we would give it a phosphate group. This would activate this phosphorylase kinase. So now this activated phosphorylase kinase would go to an inactive enzyme called the glycogen phosphorylase. Now, this is the enzyme responsible for the conversion of glycogen to glucose. If I have to activate this enzyme, glycogen phosphorylase, how would this enzyme get activated? Adding a phosphate group. Great. So हमारे पास यहाँ पर भी हम एक phosphate group add कर देंगे, which would
activate the glycogen phosphorylase. Now, once the glycogen phosphorylase is activated, it would convert glycogen to glucose. And then this glucose can diffuse out of the liver cells into the blood, and this way we would restore our blood sugar levels. Any questions? So we store one cyclic AMP caused so many enzymes to get phosphorylated. So this is basically an enzyme cascade कि बहुत सारी enzymatic reactions one after the other in a series हो रहे हैं just because of one cyclic AMP. Yes, Ammar. Yes, we only need to remember the last enzyme, right? Yeah, you need to remember the last enzyme. Yes, glycogen phosphorylase. Yeah, Miss, if what just about uh, what hmm? about the other enzymes? जो What पिछले about enzymes आप वो तो मैंने इसलिए समझाने के लिए बताया कि किस तरह से हमारा पूरा प्रोसेस हो रहा है क्या एंजाइम कैस्केड एक्चुअली है क्या दिस इज बेसिकली योर एंजाइम कैस्केड this is the same as AS level, right? जो हमने यस पढ़ा लेवल था. सेल सिग्नलिंग में जो पढ़ा था एंजाइम कैस्केड के एक कैसे मॉलिक्यूल Yes. आके इतने सारे एंजाइम्स ट्रिगर हाँ बिल्कुल एक सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है ग्लूकोगॉन उसने आया उसने सिग्नल दिया एक सेल को और उसके बाद इतने सारे एंजाइमेटिक रिएक्शंस एक के बाद एक हो रही हैं दिस इज एग्जैक्टली दैट सेम थिंग सेल सिग्नलिंग परफेक्ट अच्छा यहाँ फिर एक और अच्छा और किसी को क्वेश्चंस हैं आज मुझे एक दफा रिपीट नहीं करना पड़ा सो आई एम गेटिंग वरिड क्या सबको समझ आ रहा है सबके ऊपर से गुजर रहा है सर के ऊपर से ओके समझ आ रहा है वेरी गुड नाउ साइक्लिक एएमपी जो है एक साइक्लिक एएमपी बहुत सारे एंजाइम कैस्केड्स को ट्रिगर कर सकता है सो अ स्मॉल अमाउंट ऑफ साइक्लिक एएमपी कैन ट्रिगर many enzyme cascade reactions so can I say कि एक तरह से हमारे पास एम्प्लीफिकेशन हो रही है कि हमारे पास एक ग्लूकागॉन आकर बाइंड हुआ था और उस ग्लूकागॉन ने हमारा एक सेकेंडरी मैसेंजर बनाया और वो एक सेकेंडरी मैसेंजर इज एबल टू एक्टिवेट अ लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स लाइक एक साइक्लिक एएमपी बहुत दफा यही एंजाइम कैस्केड ट्रिगर कर सकता है सो कैन वी से कि हमारे पास ये एक प्रोसेस ऑफ एम्प्लीफिकेशन हो रहा है कि हम उस मैसेज एक इट्स लाइक एक मैसेज मैं आराम से बोल दूं क्या कहते हैं ऑन माय नॉर्मल टोन और एक मैसेज मैं लाउड स्पीकर पे बहुत ऊंची आवाज में बोलूं जो बहुत सारे लोगों तक जाए एम्पलीफाई हो गई ना मेरी आवाज बिल्कुल वैसे ही ग्लूकागॉन जब आकर बाइंड हुआ और साइक्लिक एएमपी बना एक साइक्लिक एएमपी बहुत दफा यही एंजाइम कैस्केड करवा सकता है जब तक ये ग्लूकागॉन बाइंडेड रहेगा so it's not like कि एक ही दफा ये reaction होगा. As long as this glucagon is binded and the cyclic AMP exists, this cascade reactions would happen. So this is known as the amplification of one signal. Are you guys getting this? Could I repeat? Emma, what do you want me to repeat the amplification वाला पूरी बात? So basically, आपका जो एक cyclic AMP का molecule होता है ना, it can phosphorylate or it can, you can say, it can trigger a lot of enzymes. One molecule can trigger many large enzymes at a given point, and that is why we can say that the signal has been amplified. So a small amount of an initial hormone, हमारे पास एक initial hormone आकर bind कर रहा है, ठीक है? एंड वो इनिशियल हार्मोन जब बाइंड कर रहा है तो हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स आर एक्टिवेटेड आर फॉस्फोराइलेटेड आर स्टिमुलेटेड सो दिस इज नोन एज सिग्नल एम्प्लीफिकेशन yeah you do not need to know the rest of them I think so you have to know glycogen phosphorylase as well I think so protein kinase and glycogen phosphorylase ये दोनों आपको पता होनी चाहिए because glycogen phosphorylase is that enzyme which is actually converting glycogen to glucose right so you should know that because that's the main dude सही है अच्छा नाउ लेट्स से हमारे पास यहाँ पर तो ग्लाइकोजन था हमारे पास लेट्स से एक ऐसा लिवर सेल है जहां पर ग्लाइकोजन रिजर्व्स इतने ज्यादा नहीं है सो इन दैट केस हमारे पास व्हाट हैपेंस इज दैट
fatty acids and amino acids. I think so fatty acids, not glycerol, just fatty acids. Um, they are basically converted. ओ एक मिनट मैं कंफ्यूज हो गई फैटी एसिड्स कन्वर्ट होते हैं या ग्लिसरॉल कन्वर्ट होता है आई थिंक सो ग्लिसरॉल नॉट फैटी एसिड सॉरी amino acids and glycerol amino acids and glycerol can be converted into glucose. Now, glycerol and amino acids both are non-carbohydrates. Glycerol kya hai? It is an alcohol. It is something that would form a lipid. And amino acids are again not carbohydrate based. The process through which glucose is made from non-carbohydrate sources. जब non-carbohydrate sources से glucose बन रही होती है, उस process को हम क्या बुलाते हैं? Gluconeogenesis. ग्लूको फॉर ग्लूकोज नियो को याद कर लो न्यू जेनेसिस का मतलब होता है द फॉर्मेशन ऑफ समथिंग और द सिंथेसिस ऑफ समथिंग जब ग्लूकोज नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स सच एज ग्लिसरॉल और अमीनो एसिड से बनता है उस प्रोसेस को हम ग्लूको नियोजेनेसिस बुलाते हैं और अमीनो एसिड्स का तो आपको याद भी होगा हमने कहा था कि जो अमीनो एसिड्स है जब उनकी डीएमिनेशन होती है ड्यूरिंग द डीएमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड हमारे पास अमोनिया बनता है और हमारे पास कीटो एसिड बनता है दैट कीटो एसिड इज एक्चुअली कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज सो हमारे पास जब नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस से ग्लूकोज बनती है दैट फिनोमिना दैट प्रोसेस इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस से अगर ग्लूकोज बन रही है तो हमारे पास ये ग्लूकोज कहाँ चली जाएगी ब्लड में और हमारे जो ब्लड के लो ग्लूकोज लेवल्स हैं वो रेगुलेट हो जाएंगे वो स्टेबलाइज हो जाएंगे व्हेन मोर ग्लूकोज इज मेड इन द बॉडी आर यू गाइस गेटिंग दिस और ये भी कहाँ हो रहा होता है ये लिवर सेल्स के अंदर हो रहा होता है अब मैं बताती हूँ इतना लंबा नाम बस देखो बहुत लंबे लंबे नाम पढ़ने हैं और अगर किसी को यहाँ पे आई एम प्रीटी श्योर बहुत सौ को मेडिसिन में जाना होगा फिर तो बेटा बहुत लंबे लंबे नाम पढ़ने पड़ेंगे मजा आएगा it's nice to study hard names because you can flex it to people who you know would not know them. So you can, impress people that way. Exactly, makes you feel smarter. No, you don't have to be scared. You need to feel cool. कि, oh my God, I'm gonna speak what others cannot. अच्छा now अब सबको जो कंफ्यूजन थी कि भाई ये लिपोजेनेसिस लिपिड्स क्यों बन रहे हैं या हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस प्रोटीन्स क्यों बन रहा है हमारे पास मैंने क्या बताया था ग्लिसरॉल से और अमीनो एसिड से ग्लूकोज बन सकता है इज दैट पॉसिबल Is gluconeogenesis from amino acids and glycerol possible? Now, if there are high blood glucose concentration and insulin is being secreted, we need to ensure कि हमारी बॉडी में जो ऑलरेडी ग्लूकोज है वो यूज अप हो वो ब्लड से अंदर आ जाए परमिएबिलिटी बढ़ जाए हमारी ग्लूकोज फॉस्फोराइलेट हो जाए ताकि वो वापस ब्लड में स्केप ना कर सके उस ग्लूकोज की हम ज्यादा से ज्यादा रेस्पिरेशन करवा देते हैं ताकि वो यूज अप हो जाए जो एक्सेस ग्लूकोज बचता है उसका ग्लाइकोजेनेसिस करवा देते हैं उसको कन्वर्ट करा देता है ग्लाइकोजन में हमें पता है कि ग्लिसरॉल और अमीनो एसिड से भी तो ग्लूकोज बन सकती है फ्रॉम ग्लूकोनियोजेनेसिस तो हम ग्लिसरॉल लेवल्स और अमीनो एसिड लेवल्स को भी कम करना चाहते हैं ताकि उनके थ्रू और ग्लूकोज वया ग्लूकोनियोजेनेसिस ना बने एंड this is why lipogenesis and protein synthesis occurs as a response to insulin. Is the picture now complete? So we need to ensure that this does not happen. And this is why lipogenesis and protein synthesis takes place. Are you all cool? Any questions? Yeah. Insulin converts fatty acids and glycerols into lipids so that glycerol cannot be used up to make glucose. And insulin also triggers protein synthesis so that amino acids are converted into proteins ताकि amino acids से भी हमारे पास glucose बनने के chances eliminate हो जाएं. We are not going to learn about adrenaline in this particular chapter.
हाँ एड्रेनलिन नहीं है आप लोगों के सिलेबस में. You know, when you'll come into I don't know if you guys would study this in pharmacology or what, but you would realize, but for MD कैट शायद आप लोग पढ़ो, हाँ MD कैट के टाइम पे पढ़ोगे कि बहुत सारे हॉर्मोन्स जो हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हैं. So adrenaline is not just a hormone, it's also a neurotransmitter. And does anybody, I'm pretty sure Mutahar would know, but other than Mutahar, do you guys know the other name for adrenaline? There's a very nice name for adrenaline apart from adrenaline, of course. It's called epinephrine. And you guys would study that in MTCAT. बहुत सारे नाम. जिंदगी अभी बहुत अच्छी बहुत आसान है. A levels को दुआएं दोगे तुम लोग once you're out of it. I fell in love with A levels after I was done with A levels.